A very good morning to my dear children. Today we are going to solve our next question based on profit loss appropriation account and partners capital account. Question says that there are two partners, Rahim and Sudesh, and the terms and conditions of their agreement are: first, interest is payable on capital, that is at the rate 5% per annum. So I have made profit loss appropriation account also and partners capital account also. Partners PL appropriation में interest on capital to R and S will go on the debit side. 7,500 and 7,000, how I got this I will tell you later. And interest on capital then is brought on the credit side of partners capital account under the heading PL appro. Interest on capital 7,500 under Rahim's column and 7,000 under Sudesh's column. Next it says Rahim will be entitled to a salary of rupees 500 per month. So PL appro में salary will come on the debit side and partners capital account में salary will come on the credit side. Since salary is 500 per month, 500 will be multiplied into 12 because PL appropriation and partners capital account is made for 1 full year and 1 year constitutes or has 12 months, so 500 into 12. Next is interest on loan to be given by the firm to the partners. Interest on loan, it is not an appropriation, it is a charge, and since it is a charge, it will be deducted from the profit loss, which will be brought down from profit loss account. The interest on loan is 5,000. Next, interest on drawing to be charged from partners at the rate 5% per annum. Interest on drawings यहाँ लिख दी on the credit side of PL appro, Rahim and Sudesh, and partners capital account में it will come on the debit side. Next, Sudesh will get a commission that is at the rate 1% on sales. So commission will come on debit side of PL appro and it will come on credit side of partners capital account. Next, Rahim is entitled to a rent of rupees 25,000 per annum. Again, rent, it is not appropriation, it is charge. So it will be deducted from profit loss, which is brought down from PL account, rent 25,000, and rent will be shown in credit side of partners capital account, 25,000 in Rahim's column. Okay. Now net profit of the firm for the year ended is 1,80,000. So 1,80,000 I have brought it here. So 1,80,000 में से rent गया, interest on loan गया, which is coming to 1,50,000. Next. Capital is 1,50,000 and 1,40,000. So it will come on credit side of partners capital account by balance brought down 1,50,000, 1,40,000. And since interest on capital कितना देना है 5%, तो 1,50,000 का 5% is 7,500 and 1,40,000 का 5% is 7,000. वही अमाउंट हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखी है. ओके. लोन एडवांस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2014 इज 1 लाख. तो लोन हमारा है 1 लाख, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, एंड सिंस लोन हमने दिया है 1 अक्टूबर को, तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स. तो 6 मंथ्स पे इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है हमारा 5,000. नेक्स्ट, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 40,000, 30,000. ड्राइंग्स हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी हम ड्राइंग्स यहाँ दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड 40,000, 30,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 5% पर एनम. जब सिर्फ 5% पर एनम लिखा होता है, नथिंग इज मैंशन दैट ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर और सॉरी एंड ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, कुछ भी नहीं लिखा होता है. तब हम उसमें करते हैं 6/12. वी अज्यूम दैट इट इज़ विड्रॉन एट द मिडल ऑफ द मंथ. तब उस केस में हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रही है 1,000 and 750. एंड हाँ जी, एंड लास्ट इज
ड्यूरिंग द ईयर सेल ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 7 लाख, और सेल हमें किससे चाहिए थी? कमीशन के लिए। तो कमीशन था 1% ऑफ 7 लाख, तो 7 लाख का 1% इज 7,000। क्वेश्चन में जितनी भी एंट्रीज थी, वी हैव पोस्टेड ऑल द एंट्रीज। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू क्लोज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लोजिंग कैसे करते हैं? वी टोटल द डेबिट अमाउंट कॉलम ऑफ डेबिट साइड एंड अमाउंट कॉलम ऑफ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का अमाउंट कॉलम ज़्यादा आ रहा, तो इसीलिए हमने नीचे उसका लिखा टोटल, और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 124,250 विल बी शोन, विच विल बी शोन ऑन द शॉर्टर साइड। और शॉर्टर साइड कौन सी है? डेबिट। सिंस हमें क्वेश्चन में नथिंग इज मैंशनड अबाउट द रेशियोज, कि ये प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नथिंग इज मैंशन, सो वी विल डिवाइड इट इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। तो इक्वल कितना हो गया? 6:125 एंड 6:125। दिस विल बी शोन ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड, 6:125, 6:125. Now after closing profit loss appropriation account, we have to close partners capital account. How will we close? रहीम का क्रेडिट साइड को टोटल करो, विच इज़ कमिंग 2,50,625. फिर हमने इसको माइनस किया 40,000 से और 1,000 से, और जो बैलेंस है इट विल बी शोन एज टू बैलेंस कैरिड ऑन 209,625. सेम वे सुदेश का करना है। सुदेश का क्रेडिट साइड का टोटल करा, विच इज़ कमिंग टू 2,50,625. इसका भी हम लोग, सॉरी, इट इज़ कमिंग 216,125. आई हैव रिटन इट बाय मिस्टेक. ओके, फिर इसका हम लोग इन दोनों से माइनस करके फिर हम ये डिफरेंस यहाँ लिख देंगे, एंड इट विल बी शोन एज टू बैलेंस कैरिड ऑन. थैंक यू. विद दिस द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ट्राई मारो. In case if you have any problem, ask. Thank you.